So that's my story about Baba, those two times meeting Baba, that he showed me that we do communicate with him. He does listen to our hearts. And we store so much in our heart. So we have to keep our heart clean. What does that mean? A clean heart. No bad no bad memories, no negative thoughts, no waste thoughts about why is she doing that? How could he do that? We have to make our thoughts and attitude so clean, so pure, because the cleaner we are and the purer we are, the closer we are able to be to Baba. You like Bolo Bai? Are you the translator? Yeah. Om Shanti. Om Shanti, Bhai Ji. शांति दीदी अपने बाबा मिलन का अनुभव बताते हैं कि जब एक बार ओम शांति भवन में वो बाबा के सामने बैठे थे और होली का समय था और सभी ने बाबा को रंग दिया, तो बाबा के ऊपर भी जैसे बहुत सारे कलर्स और पेटल्स और काफ़ी कुछ था। तो बहन जी ने मन में ऐसे सोचा कि बाबा आपको ऐसे कैसे कोई कर सकते हैं, पर बाबा बिल्कुल जैसे अपनी स्थिति में ऐसे बैठे थे। तो जैसे ही उनके मन में ये संकल्प आया तो बाबा ने उनको देखा, उनकी दृष्टि, बाबा की दृष्टि सीधे दीदी को मिली, तो फिर उनको अंदर से ये फील हुआ कि नहीं, बाबा हम जो सोचते हैं बाबा सुनते हैं। और तुरंत बाबा की एनर्जी से उनके मन के सारे संकल्प खत्म हो गए। तो उन्हें ये फील हुआ कि जो भी हम दिल से, सच्चे दिल से, साफ दिल से और साथ में बाबा के लिए प्यार और पैशन जब होता है, तो बाबा दिल की बात सुनते हैं और उसका रिस्पॉन्ड भी देते हैं। You have a good memory. Not that much, but the way you described it was just everyone will remember. That's being humble. So we're still waiting for 3-4 people. Is that true? Right? We're here now. now. Sangeeta Bindu, Yes? Okay. Yeah, we are on. Okay. So this is some drills for practicing soul consciousness. I want you to imagine that you're in your car, your vehicle, the one that rides on the road, on the highway. Okay? Not this one. And the rain is starting to come down and it's pouring. So you want to stop and you find a nice place to pull your car over, and there's a beautiful pond there. And so you park there, you're watching the pond, and the rain is pounding down. But you feel so safe inside the car. ऐसा इमेजिन करें कि आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है और आपने एक स्थान पर गाड़ी रोकी और आपके सामने एक लेक है, पॉन्ड है। आप गाड़ी में बैठे हैं और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, पॉन्ड में भी बारिश आ रही है, लेकिन आपको अंदर से ये फील हो रहा है कि आप बिल्कुल सेफ हैं। I was just wondering where you were. I was going to ask you, where has Raj been? Rajesh.
And doesn't it feel safe to be inside? It feels safe to be inside when the rain is pounding on you. जब बारिश होती है तो बहुत सेफ लगता है जब हम अंदर होते हैं. And for me, and for anyone who practices being inside, there's a safety feeling that comes. तो जब हम अंदर में होते हैं तो एक फीलिंग होती है सेफ्टी की. But what happens is we ride around in these vehicles called bodies. पर होता यह है कि हम ये जो शरीर रूपी गाड़ी में चल रहे होते हैं. But we look at life from the windshield outside. और अब हम जो गाड़ी से बाहर जो दृश्य दिखते हैं Samja, लाइफ को उस रीति से देखते we हैं. don't move inside and look out. We look at life like this. हम लाइफ को जैसे बाहर ही देख रहे हैं पर अंदर आकर फिर हम बाहर नहीं देखते हैं. So I want you all just to find a place to stare at. And I'm going to ask you just to describe things on the outside world, okay? In other words, sorry. तो एक स्थान पर अपनी दृष्टि एकाग्र करें और हम आपसे पूछेंगे फिर कि आपको क्या क्या बाहर नजर आ रहा है. Is Farishta upstairs? Upar? Farishta? Who? Should we wait? Huh? Someone. So I'm looking now, this brother, but also I see many other things on the outside. I see the wall behind him. I see the cabinet behind him. I see pictures on the wall. I'm looking straight over there, but I also see way over there the opening into this room. So I want you all to tell me while you're looking at me, or you can find a spot to look at, in your periphery vision, what are some things you see? You have to yell it out. जैसे मैं इन भाई को देखती हूँ तो मैं भाई को भी देखती हूँ, उनके पीछे की दीवार को भी देख रही हूँ, उनके साइड में कुर्सी भी देख रही हूँ और उसके साइड में बिल्कुल दूर जो ओपनिंग दरवाज़ा वो भी देख रही हूँ. तो वैसे ही आप कहीं एक जगह दृष्टि एकाग्र करें और आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो बताएं. What do you see? आप क्या देख रहे हैं? Window? Brahma Baba? Shiv Baba? You see people all around you? Okay. Point of light. You also see your body. Is that what you said? Bingo. You said you're the new one and you don't know how to be soul conscious. There's only two worlds.
the outside world and the inside world. And many times, this body we're in disappears. तो सबने कहा कि क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा कि हमें शरीर भी दिख रहा है। तो दीदी समझा रहे हैं कि कैसे ये जो शरीर है, हम इसको अपने साथ ही मानते हैं। तो कई बार शरीर जैसे डिसअपियर हो जाता है, शरीर को हम नोटिस नहीं करते हैं। It's like observing on the outside of the windshield. The forehead is the windshield of this body. जो भ्रिकुटी है, ये इस बॉडी रूपी गाड़ी की विंडशील्ड है। But this sister said she sees the body. Were you seeing your own body or my body? Your own body. Because the body is part of the external, isn't it? And that's what we're going to practice. तो शरीर भी हम एक्सटर्नल दुनिया का पार्ट समझकर इस विंडशील्ड के अंदर बैठकर फिर अपने आप को अनुभव करेंगे। Does anyone remember what was shared with us that Baba said about 8 deities that pass with honor? Do you remember? आपको याद है जो बाबा ने कहा कि जो 8 पास विद ऑनर होंगे, उनकी निशानी क्या होंगी? No? No one remembers. किसी को याद है? You're all so clever. आप सभी बहुत क्लेवर हैं। Constant soul consciousness. Only 8 deities pass with honor. The method to pass with honor is to see the body, but not be body conscious. So we have to be inside, looking out. You go back down. We have to watch ourselves. Watch what the body is doing. तो जो 8 देवता पास विद ऑनर होते हैं, उनकी निशानी है कि वो शरीर को देखते हुए भी देह भान से परे रहते हैं। तो वैसे ही हमें इसका अभ्यास करना है, शरीर को देखते भी शरीर के भान से अलग। When I was a little girl, we went to the Statue of Liberty. How many of you have been inside the Statue of Liberty? You can still go in, but way back then, when I was a little girl, we were able to go all the way up to the head, the crown, and look out. तो जब मैं छोटी थी तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है, तो वहाँ पे गई थी, तो उसके अंदर जा सकते हैं। But maybe you've looked through a window of a tall building. Yes, everybody? She said she's been to the Statue of Liberty, but not inside. Okay. But you've been to a building that's tall and you looked out from the window. Gee? कोई भी दूसरी बिल्डिंग के ऊपर से, विंडो से हमने सबने जरूर देखा होगा। And you even look down and you see part of the building that you're in. और हम नीचे देखते हैं तो बिल्डिंग का पार्ट भी दिखाई देता है। And you can even look
out to the side of the building. और बिल्डिंग के साइड को भी देख सकते हैं. Only 8 deities pass with honor. केवल 8 They're देवताएं watching the body, but not body conscious. So let's sit. Bolo, Bolo Bai. I'm going to call you Bolo Bai. केवल 8 देवताएं ही पास विद ऑनर होते हैं, तो शरीर को देखते भी शरीर से न्यारे. So as you look forward in one fixed position, staring ahead, I want you to notice as much as you can that you are on the top floor of this building called your body. अनुभव करें कि आप इस देह रूपी बिल्डिंग के सबसे ऊंचे फ्लोर पर हैं. Do you see your lap down there? You're not looking at your lap, you're looking out. क्या आप अपनी गोद को देख सकते हैं ऊपर से? You can shake your head like this or like this. अगर देख सकते हैं तो Do you see your lap? अपनी गोद देख सकते हैं तो सर हिलाए, नहीं तो बोले नहीं. You're being conscious of the body, yet not body conscious. आप शरीर के अवेयरनेस में हैं, लेकिन देहभान से नहीं, देहभान से परे है. Now I want you to watch my eyes if you can. Can अगर you आप see? देख सकते हैं तो मेरी आंखों को देखें. I am going to, I love to do this because it gives me a feeling of being inside, behind the lens of the eyes, behind the windows of the soul. तो हम अंदर आत्मा की खिड़की के अंदर अपने आप को अनुभव करें. So if you look down, just cast your eyes downward, but keep the lids down. So you have to exercise holding the lids, but your eyes looking upward. Tell me what you see. Anyone. फील करें कि अपनी आंखें देखते हुए पर जो हमारी आईलिड्स हैं उनको ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं, तो हम क्या अनुभव कर रहे हैं. Brothers, cast your eyes downward. अपनी आंखों से नीचे देखें. Do you see the inside of your eyelids, the blackness of your eyelids? जो आपकी आईलिड्स हैं तो उसके अंदर के पार्ट को जो काला है, क्या आप देख पा रहे हैं? If you see that, raise your hand.
अगर आप देख पा रहे हैं तो हाथ ऊंचा करें, नीचे देखना है और So look ताकि down, eyelids cast your vision down, and you're just squinting. You understand this word squint? You're peeking out, just peeking out. G, do you see the inside of your eyelids now? कि आप अपनी eyelids भौएं जो है उसके अंदर के पार्ट को देख सकते हैं। Raise your hand अगर if you देख do. सकते हैं तो हाथ उठाएं। आंखों से नीचे देखते This gives us a feeling of being inside the head, behind the eyes, behind the face. यह हमें अनुभव कराता है कि हम इन आंखों के पीछे बैठे हैं और इस चेहरे के भी पीछे बैठे हैं। Keeping the eyes downward, your vision cast downward. आंखों से नीचे देखते रहे, Keeping your head still, your body still, अपना मस्तक और शरीर बिल्कुल स्थिर रखें। just moving your eyes, your eyeballs. केवल अपनी आई बॉल्स को, आंखों को, पलकों को Look घुमाएं। to the right and look to the left. राइट की ओर देखें और फिर लेफ्ट की ओर देखें। Again, just observe you're inside this vehicle called the body. फिर से अनुभव करें कि आप इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, But you're inside, behind the eyes, behind the mask of the face. पर आप इन आंखों के पीछे, इस चेहरे रूपी मास्क के पीछे बैठे हैं। And just observe और बस how it, देखें how it feels to observe from behind the windshield instead of on the windshield. कैसा अनुभव होता है विंडशील्ड के पीछे से देखना, विंडशील्ड पर बैठकर देखने से अलग। You, the soul, are hidden away inside, and you are observing from the inside. आप आत्मा अंदर हैं और अंदर से ही बाहर की दुनिया को देख रहे हैं। Feel yourself behind the eyelids, behind the eyes, behind the face. फील करें अपने आप को इस भ्रिकुटी के पीछे, आंखों के पीछे, इस चेहरे के पीछे। How does it feel? Can you speak? कैसा अनुभव होता है? क्या आप बोल सकते हैं? Safe,
You feel separate from the body? क्या आपको शरीर से न्यारेपन का अनुभव होता है? You're so conscious. If you're separate from the body, you're observing through the body, but you're not body conscious. आप आत्म अभिमानी हैं, आप शरीर के द्वारा देख रहे हैं, पर शरीर के भान में नहीं है। You can even observe parts of your face. Yes? आप अपने चेहरे के अलग अलग भागों को भी देख सकते हैं। It's a different viewpoint than when you look into a mirror and see your face. जब हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो ये अनुभव उससे अलग है। So look to the left, look to the right. What do you see of this building, the body? What do you see? Bolo. Bolo koro. लेफ्ट में देखें और राइट में देखें इस शरीर रूपी बिल्डिंग की और बताएं कि आप क्या देख रहे हैं। You can see your nose, the side of your nose, yes? It's a different view. Have you ever seen it like that before? You see it from looking in the mirror, but now you're inside looking at the mask that covers you, the soul. तो आप अंदर हैं और अंदर से उस मास्क को देख रहे हैं जो आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है। I want you to find a partner. Sit across from your partner, face to face. You have to rearrange yourselves. Those on the floor, you stay on the floor. Those that are in seats, आप दो दो के ग्रुप्स में move your बैठ chairs सकते हैं। to face each जो other. चेयर्स पे है वो चेयर्स पे रहे, जो जमीन पर है वो जमीन पर रहे और एक दूसरे को फेस करें। Do, 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 face to face. Oh, sit bien. As you're looking at your partner, greet your partner by looking at the forehead and agreeing to be in this experiment. सामने वाले के मस्तक पर देखें और इस अनुभव में हम साथ हैं ये महसूस करें। Now I would like for us to lower those eyelids partially, but still be able to see your partner, but see from the inside out, seeing the inside of the eyelids. अभी आंखों को धीरे से नीचे करें
और आईलिड्स के पीछे बैठते हुए अपने पार्टनर को देखें. If you move your head backwards, it might be easier to keep your eyelids partially open and see your partner. अगर आप अपना चेहरा पीछे करें सिर, तो So आप नीचे देखते भी पार्टनर को देख सकते हैं. focus on the eyelids from the inside, आईलिड्स के अंदर से बैठते हुए creating that देखें. feeling इस अनुभव को क्रिएट करें. that feeling that you're inside, watching out. ये फीलिंग कि आप अंदर हैं और बाहर को देख रहे हैं. You, the soul, are watching from the inside of the windshield. आप आत्मा शरीर के विंडशील्ड के पीछे बैठकर बाहर देख रहे हैं. How does that feel? Sisters, कैसा Bolo. अनुभव होता है बहने, बताएं. Do you feel like you're peeking out? Let me ask you this. When you were a small child, did your mother ever send you to your room to go to bed at night? If yes, shake your head yes. अगर आपने किसी बच्चे को सुना, तो क्या आपकी माँ ने आपको सोने के लिए कहा? अगर हाँ, तो अपना सिर हिलाए. Shake your head yes or no. हाँ या ना. American style. अमेरिकन स्टाइल में कहे हाँ या ना. How many say yes? Raise your hand. Yes, raise your hands. If it didn't happen, pretend now that your mother sent you to the room to go to sleep. For you have school in the morning. तो ऐसा सोचें कि आपको आपकी माँ ने कमरे में सोने के लिए भेजा है और आपका सुबह स्कूल है. But you're not tired. पर आप थके हुए नहीं हैं. So you have to make believe you're sleeping. आप सोने की एक्टिंग कर रहे हैं. But she's coming down the hall to your room to check on you. वो आपके रूम की तरफ हॉलवे में आ रहे हैं आपको देखने के लिए. And she sees you in bed so still. और वो आपको बेड पर, पलंग पर बिल्कुल स्थिर देख रहे हैं.
but you're peeking out very slightly, watching her. पर आप हल्के से आंख खोलकर उन्हें देख रहे हैं. You know she doesn't see your eyes moving. आप जानते हैं कि वो आपकी आंखों के मूवमेंट को देख नहीं सकते, Because you're opening your eyes so toro. क्योंकि आप अपनी आंखें बहुत थोड़ी थोड़ी खोल रहे हैं. Again, you are watching from the inside, looking out. आप अंदर से बाहर की ओर देख रहे हैं. Who is watching? कौन देख रहा है? Is it the soul? Yes. क्या वो आत्मा है? हाँ. Peeking out from the eyes. You've lowered the window shades. The window shades are the eyelids. तो आपने विंडो शेड्स को नीचे किया. ये आईलिड्स पलकें जैसे विंडो शेड्स हैं. Now open the window shades, open them wide, looking at your partner across from you. Raise your window shades. अभी विंडो शेड्स को ऊपर करके अपने सामने वाले पार्टनर को देखें. And then begin to close them slowly, और अब धीरे धीरे hiding उनको क्लोज करें. inside. अंदर छिपते हुए. Seeing the body, but not being body conscious. अब शरीर को देख रहे हैं पर शरीर के भान से अलग है. Look at your partner again. अपने पार्टनर को फिर से देखें. And as you blink your eyes, just blink them slowly and open them. जैसे आंखों को ब्लिंक करते हैं बहुत धीरे धीरे ब्लिंक करें और फिर ऊपर करें. How many times in the day do we talk to others? हम सारे दिन में कितनी बार दूसरों से बात करते हैं. And any time that they're talking to us, कभी भी वो जो दूसरे हमसे and बात we're करते हैं listening, और हम सुन रहे हैं, you can just slightly blink slowly to put your awareness on the inside. या आप आंखों को धीरे से बंद करके इस स्मृति को जागृत कर सकते हैं. Out very
very slowly and gently move back to your seats. अभी धीरे धीरे अपनी सीट्स पर वापस बैठ जाए. Thank your partner. अपने पार्टनर को थैंक्स करें. Who would like to share? शेयर करना चाहेंगे? Arjuna first. अर्जुन कौन बनना चाहेंगे? Feelings, experience. क्या अनुभव हुआ? It may not have been anything. Maybe nothing happened. हो सकता है कुछ नहीं भी That's हुआ good हो. too. वो भी ठीक है. Um, I just began to, like in meditation, they say we should be able to see the soul in between the eyebrows. During this practice, I thought I just had a hint of it. I couldn't hold that scene for long enough, but I got a glimpse of it. And then when you said that lower your eyelid and be still able to see your partners, I was seeing her face very, not very clear, fuzzy. Is that what you expect to see? What we were trying to create was a feeling of being behind the eyelids, whether she turned out to be fuzzy or not. तो बहन पूछ रहे हैं कि जब हमने देखा आंखें धीरे धीरे बंद करके तो सामने वाले का चेहरा हल्का हल्का धुंधला दिखता था. तो बहन बता रहे हैं कि ये पर्पस है कि हम अपने आप को आंखों के पीछे बैठकर फिर बाहर देखें, बाहर चाहे जैसा भी अनुभव हो. And what did I call this? I said this was a experiment, a practice. To practice. Do you remember the first time you rode a bike? Oh my God, it was so hard. ये एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है. आपको याद होगा जब पहली बार आपने कोई भी साइकिल चलाई हो तो कितना मुश्किल लगा होगा. But what happened the second time? और You दूसरी became an बार expert. धीरे धीरे हम एक्सपर्ट बन जाते हैं. This is a practice for those that want to experiment, explore soul consciousness from being inside, behind this mask called the face. तो एक एक्सपेरिमेंट है अपने आप को इस चेहरे रूपी मास्क से के पीछे बैठकर अनुभव करने का. Anyone want to share? शांति वे केवल एक छोटा सा बिंदु बिंदु पर भी just a circle around the just a light circle, like white light about sparkle light. That's what I said. Nothing else. So she saw a sparkling light, nothing else. Om Shanti. So during this practice, I felt like I, the soul,
I'm just speaking, for example, the child looking like this, that kind of feeling, like from the window like this. I felt that way. And I felt the stillness and then power, and I felt the soul power. Om Shanti. Thank you so much. Om Shanti. ओम शांति। अपना भी अंदर से जैसे इसके नीचे नीचे लाइट लैंप लैंप की तरह है ना। I felt light like a lamp when I was moving my eyelids. सिस्टर के लाइट गोल्डन लाइट एंड इसे इसे पूरा बस पूरा सब अंदर ये बहुत अच्छे से गोल्डन कलर में पूरा फेस नहीं कुछ नहीं लाइट लाइट यहाँ लाइट फोकस और अंदर पूरा टाइम फेस नहीं लाइट और अंदर गोल्डन No face, but good light and golden light all around. I experienced it. It was a vision that came and went back and forth. I would feel like that the body is here and I'm looking through an opening. Yeah, it was mostly how I felt it.
At one point, I could feel like the body. It was just like this part. I wasn't feeling my neck. I wasn't feeling my hands. I just was feeling this very controlled, kind of like that feeling. मुझे अनुभव हो रहा था कि मैं जैसे शरीर को देख रही हूँ, जैसे शरीर से अलग न्यारेपन का अनुभव हो रहा था। When I opened my eyes slowly, then I saw like a window. Maybe Saul had window or Saul had case. So like a pillowcase. I feel like that. And when before that, when we was practicing then felt like my face was separating from my body. Like this part is separating. I feel separate little bit. That's all. Thank you. Om Shanti. चेहरा शरीर से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। Om Shanti. I just realized कि whenever I used to meditate, I used to see the soul from third angle, third view. Like I'm seeing soul in my face somewhere. But today I felt like I am the soul, so I can see the soul. I can see the outside. So I felt from my view like I am the soul. Yeah, like I am the soul, so I can see the outside. And also when I was seeing brother, I felt like I'm seeing in the third layer, like me, then I see my body, then I'm seeing the brother. So like there's three layer, not just I'm seeing outside this, my body and then the brother. So that's what I experienced today. पहले जब योग करते थे तो बाहर से आत्मा को भ्रिकुटी में देखते थे, पर अभी ऐसा फील हुआ कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर को और बाहर की दुनिया को देख रहा हूँ। तो 3 लेयर्स में अनुभव हुआ कि पहले मैं आत्मा, फिर मेरा ये शरीर और फिर जो सामने भाई बैठे हैं वो। Om Shanti. I felt I was guiding the body. That much I could feel. Squinting eyes, like it made me a little conscious. Like when you asked me to squint the eye, when you asked me to squint the eye is when like I got a little task conscious, but yeah, I could feel that I'm guiding my body. Yeah, Om Shanti. मुझे अनुभव हुआ कि मैं अपने शरीर को गाइड कर रहा हूँ। धीरे धीरे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। धीरे धीरे शुरू में तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जब आईज को कंसंट्रेट किया आईलिड्स पर, तो मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, खाली बस आंखें उसी में। So initially I was seeing something, but then when I focused entirely on just the eyelids, then slowly I couldn't see anything else. I concentrated on the point of light, जो मैं हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, एकदम पीस, लाइट ही लाइट। Thank you. I was seeing myself, light and only light, and a point of peace. ओम शांति। जैसे बोला आईज बंद करी, पहले यही दिख रही थी मेरे को मेरी सामने, पर फिर जब मैं अंदर की तरफ झांका तो मतलब अपनी लाइट सी महसूस हुई
और फिर उसके बाद मेरे को मेरी अपना शरीर ऐसे बाहर दूर देखा बैठा, तो लाइट दिखी। First, I saw the partner in front of me, but then when I looked inside, then I just saw myself and then the body from a distance. Om Shanti. I think I experienced peeking out. Like I realized, I'm looking out when I have my eyes lowered. And then when you asked us to look from left to right, I realized that I was totally controlling. I was looking out of a window, but I'm totally controlling which angle I want to look at. So I think, like I realized how much control I have in terms of what I do. So Shanti, thank you so much. मुझे रियलाइज हुआ मेरा कितना कंट्रोल है जब हम आंखों को लेफ्ट और राइट मूव कर रहे थे. Up. Yeah, for me, think the way you described Dorothy Ben, it's really just a sense of being in the body and feeling this. This is really a mask that I'm wearing, just like we wear a dress. This is really that mask, and just like dress, we are in full control. I can see, like, you move, and then these are the windshield, and you can see the nose, everything. It's like a 3D. Just a very good experience to feel detachment from this mask. So this is just something for you to play with, experiment, explore, and teach me something in your exploration and learning. And I thank you all for having the courage to participate. Yeah. We would like to thank you, sister. These are so important aspects, I feel, and many times in the expansion of Gyan, these simple but yet so powerful practices get kind of a backseat. But this is so nice. Uh, Zoom, maybe if someone Zoom पे भी कोई बोलना चाहेंगे? Anyone from Zoom would like to share? So we can just sit with Baba. I'll play some music and you can explore for a little bit. We'll have a short meditation. तो हम थोड़ा भी योग करेंगे और दीदी फिर योग भी कराएंगे.
Something else we can do is when we're inside looking out, invite Baba with you. Baba, look what I see from behind the eyes, the mask. बाबा को भी अपने साथ बुलाकर देखें, बाबा से बात करें कि बाबा मुझे ये मास्क इस तरह से दिखाई दे रहा है। This is the age to practice everything and anything, all. ये समय है अभ्यास करने का। ये समय है अभ्यास करने का। I really felt, Dorothy, that when Baba says in the Murli, every day practice being soul conscious, we often remember the words, but what actually to practice, like what is the detail of it? I felt you kind of
given such a beautiful experience of that. So these 2 sessions are really, really important. And this is something we can easily do. I feel sometimes we can say, oh, going to Paramdham may not be, things may pull us down. But here, just detaching, then seeing the body as different and the soul as different, it is something which is very practically possible, I felt. I was wondering if in the golden age we're soul conscious. I wonder if we treat the body just as we would see our car, being from the inside, watching out, never forgetting that this is just the car, the vehicle. It must be. It has to be an experience, not an intellectual exercise. Maybe an intellectual exercise until we become a master, but an experience. बोलो। सतयुग में जो आत्म अभिमानी स्थिति है, ये कोई बुद्धि के एक्सरसाइज नहीं, पर हमारे लिए एक रियल अनुभव होगा। तो उसकी जैसे अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। She's asking, like when when you were meeting Baba, and was it okay for you because everyone would be speaking in Hindi? Were you able to relate to it, or what was your experience? Like when you were in Madhuban, for example, initial days when you were meeting Baba, and Baba would speak in Hindi and everyone would be speaking in Hindi. Of course, you would have translation, but still, was it a huh? Did you feel anything like, like a barrier of No, language? because it was all I knew. Mm, And there was always translation provided, mm. and it was all I knew. तो translation तो होता था. And it's wonderful Mm. to hear Bubba's voice, to hear his vibration when I was in Madhaban. I heard his voice, I listened to him, his vibration, and then to be translated simultaneously. तो जो बाबा को देखते थे, सुनते थे, तो उनसे वाइब्रेशन का अनुभव होता था, और फिर उसी टाइम फिर ट्रांसलेशन एक बहन इंग्लिश में करके उनको So I don't feel like I've missed anything. Although I know that when you listen to Baba directly in Hindi, there are many words that can't be translated in English. But love is a language that needs no words. तो प्यार जैसे वो भाषा है जिसमें शब्दों की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ वर्ड्स हिंदी मुरली में ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरा पूरा नहीं भी कर सकते, पर फिर भी वो प्यार की भाषा से बात करते हैं। जी। Total English. Bye, G. English. Oh, sorry. So she's just saying that yes, she can understand and she appreciates that the language of love is the greatest language. There was another time, Baba stopped meeting us and we were meeting Baba in Shantivan. And then there's a time when we just could walk by Baba and take some drishti. But there was one time when I was all the way on that side of the stage and no one was in front of me
for some reason there was a gap. वो एक बार जैसे मधुबन में पहले तो बाबा आते थे, फिर बाद में हम बाबा को, जैसे बाबा चलते थे फिर मिलते थे, तो एक बार स्टेज पर जैसे दीदी बिल्कुल साइड में थे और बाबा और उनके बीच में कोई गैप नहीं था. And I started walking from the end of the stage in Shantivan. And I walked straight in front of Baba. And Baba was looking at me like this. He wasn't seeing anyone else, just me. Anyone behind me? He just saw me. तो वो स्टेज से एक तरफ से चलते चलते बाबा के पास गए और बाबा केवल उन्हीं को ही देख रहे थे शांतिवन के स्टेज पर. तो बाबा केवल उन्हीं को देख रहे थे और किसी को भी नहीं उस टाइम देख रहे थे. And when I got home to the USA, my brother, who I was extremely close with from childhood, like this, was getting ready to leave the body. तो जब मैं फिर इंडिया से अमेरिका आ रही थी, तो उसी टाइम जो मेरे ब्रदर है, भाई है, जिनसे मैं बहुत क्लोज थी, तो वो शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे. He had terminal cancer, got it quick, and left quick. उनको बहुत कैंसर की बीमारी थी और बिल्कुल पता चली लास्ट स्टेज पर, और जल्दी उन्होंने शरीर छोड़ दिया. So whether it's drama or Baba or love, drama loving me, karma loving me, Baba loving me, it was a sign about feelings. तो मुझे जैसे बाबा ड्रामा से एक इशारा मिल रहा था फीलिंग्स के रूप से. एक तरफ मैं बाबा के नज़दीक आ रही थी, एक तरफ फिर पुराने संबंध जा रहे And थे. that sustained me through this huge shock. तो ये जो बहुत बड़ा धक्का जो था एक ड्रामा में जो मुझे लगा, लेकिन बाबा के इस अनुभव से मुझे बहुत हेल्प मिली. When it was happening, I didn't know. I said, why is Baba looking at me? Just me. But when I got home, I felt I knew in my heart. उसी टाइम मुझे लगा कि बाबा मुझे क्यों देख रहे हैं, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि बाबा इसीलिए मुझे देख रहे हैं. उसी समय उनके भाई जैसे शरीर छोड़ रहे थे. I don't know if it was Baba or drama. It doesn't matter. Probably Baba. But how do I know for sure? But I know that it happened. When it happened, I felt it and didn't realize it till I got home. Why? I kept saying, why? Why? Why Baba? You know, because people were going so fast and it was like Baba was doing this to everyone. But when I got on the stage, it was like, was it my karmas? Who cares? It felt good. And I know it was good. जैसे उनको अनुभव हुआ, बाकी सबसे तो बाबा जैसे एक सेकंड दृष्टि देके फिर वो आगे चले जाते थे, पर विशेष उनको ये अनुभव हुआ कि बाबा ने लंबे समय तक उनको ही देखते रहे और उन्हें बहुत अच्छा अनुभव हुआ. Samjha? She's asking if anyone else from your family is in Gyan with Baba. No. My sister was a little bit for a while. No. तो उनकी बहन थोड़े समय के लिए थी, पर अभी कोई नहीं.
wait a minute, this is all my family here. All my family. हम सभी उनके परिवार हैं. How did you come to Baba at the beginning? I came through going to the museum in Tampa, the Mind's Eye Museum. Mhm. तो टैम्पा फ्लोरिडा में एक म्यूजियम है माइंड्स आई, तो वहां पे वो पहले गए थे. हाँ, म्यूजियम. She's saying you found Baba in the museum. Yes. Tampa. So Daddy Janki, and so when they were still building the museum, but they let me in. म्यूजियम बना ही रहे थे पर उनको आने दिया उन्होंने म्यूजियम के अंदर. And what Daddy Janki said, I was the first baby of the museum. And the day it opened, I was there doing seva. I opened the museum. There was just two of us, Rick and me. We both had businesses, Gene's businesses. And he had to work. And I opened the museum on the first day. तो म्यूजियम खुलते ही जैसे मैं आ गई तो दादी जान की ऐसे उनको ये ब्लेस किया. तो तुरंत ही जैसे जब म्यूजियम खुला तो उन्होंने ही जैसे खोला. एक और भाई है रिक, उनका भी जीन्स का बिजनेस था. पर फिर डॉर्थी बहन ने जैसे जैसे म्यूजियम खुला तभी वहाँ पे सेवा करना शुरू किया. I was only a few weeks old. बस कुछ ही हफ्ते उनको ज्ञान में आए हुए थे. Rajesh Ben was asking which year was it? 1986. 86. She's asking what was your age when you came into Gyan? 40. 40. 40. 40. 40 साल. Abhi? 80. अभी 80, अभी 80 साल के. 40 साल. You're all my grandchildren. हम सब उनके नाती और पोते हैं. She has a question. Yeah. No, I didn't. That was way before my time. 1969. He left the body in 1969. And I came into Gyan in 86. When I experience Baba more than going to Paramdam, I just experience a warmth that comes over me. And I don't know if you noticed, but many times I get very hot in meditation. I had to take this off in the middle of meditation. Do any of you get warm, hot in meditation? I do. I do. But I get a warm feeling and a close feeling to Baba. And that's my goal, is just to be with Baba, wherever it is, soul world, subtle region, or here. पूछ रहे हैं परम धाम का क्या अनुभव है. तो बताते हैं कि ऐसा बाबा का अनुभव होता है, बाबा से समीपता का अनुभव होता है और लगता है कि जैसे थोड़ा गर्म जैसे लगता है. तो ये उनको पर विशेष चाहे जहाँ भी हो परम धाम में, सूक्ष्म वतन में या यहाँ पर बाबा के साथ का समीपता का अनुभव उनको होता है. When I really like to experience Baba is when something happens unexpectedly. And I just thank Baba and drama, both, because I don't know who, really.
But I'm so grateful for both of them. They're a good team. जब कोई हमें एक्सपेक्ट नहीं करते और कुछ होता है तो फिर लगता है कि कैसे बाबा और ड्रामा दोनों साथ में काम कर रहे हैं एक टीम की तरह. So whenever something good happens, I'm just, thank you, Baba, thank you. Like I forgot about a special important meeting, appointment, and 5 minutes before I remember. जैसे मैं कोई अपॉइंटमेंट भूल गई थी पर 5 मिनट पहले मुझे अचानक याद आया. I just say thank you. I just feel grateful. And what happens when we feel grateful? Huh? Yes. But also you create more gratefulness to come to you, more things to be grateful for. You've created that energy, more goodness is going to come. जब हम ग्रेटफुलनेस यानी धन्यवाद के शुक्रिया के भाव में रहते हैं तो हमारे साथ भी फिर और अच्छा होने लगता है. What's the word for gratefulness? एक You understand gratefulness? धन्यवाद नहीं. शुक्रिया का भाव. Shukriya. Okay. शुक्रगुजार होना बाबा को शुक्रिया. Okay, it's time to go to bed. Thank you.